अरे कितना सेक्सी हो बहन चो। जूता मिल गया। One foreign DJ that you want to work with. येलो क्लॉक। मेरे TEDx टॉक के 500 व्यू, टीचर आंटी से प्यार के 5 मिलियन। मैंने कहा क्या चुतिया मुझे बजाते हो तुम लोग यार रेडियो पे बहन चो। मैंने कहा जय माता दी हटाओ, नाचो बहन चो जोड़ो, कल हो गया। Hello everyone and welcome to Mad Influence present Mad Talks powered by MyHQ. This is Sania Talwar and I'm going to be your host for the show. So the guests that we have on our show today, they define madness. One of them changed their career at the age of 47 and the other one, what do I say about him? अगर दिल्ली वाले हो और 95 FM सुनते हो तो खोलो तो तत्वा के स्टाइल में बेबी तो सुनने को मिलता ही मिलता है। तो तत्वा के स्टाइल में बेबी जोर से बोलो बुर्रा because we have two amazing guests on show today, Manish Tyagi and Tatwa K. All right, welcome to Mad Talks. It's our pleasure to have you here. How are you both feeling? दादा we are better together. Yeah, that's because of our backgrounds. Right? हाँ जी। Cheers. So both of you have this genre of speaking. Both of you are like, you're a DJ, you're a stand-up comedian, whatnot. So both of you are always with a mic in the hand. So today both of you are behind a mic with a beautiful host in front of you. How do you feel about it? नहीं, we can't use that word anymore ना। दादा आपकी शादी हो गई? टूट भी गई। फिर तो आप हाँ मैं बोल नहीं, ये शब्द यूज नहीं हो सकता लेकिन अच्छा, अब ठीक। हाँ, beautiful is not a word to be used anymore। All right. Me too hashtag। She must be feeling at home, dad and भाई बात है। पापा मैं एक चैट शो पे हूँ, हाँ बोलो बेटा। Let's hear you out। So Manish, not a lot of people know, but your career at the age of 47 was started when your daughter pursued and told that you have a funny bone with you, dad. So why don't you just start with a stand-up comedy line? So tell us about your journey and how did your daughter influence you into this? Yeah, on a serious note, yeah. So stand-up comedy, everybody has to have a funny bone to start with because a lot of people ask me this question. Yeah. I want to become a stand-up comic, and my answer to them in colleges and other shows is that if people say that whenever XYZ comes and पूरे माहौल शादी में लोग होते वो आएगा तो entertainment होगा। But this was when you were in the Navy background also. यार बचपन से ही चलता था तो but the point is it's a question of changing careers and getting there. Yeah. So the funny bone has to be there and then you need that little bit of like हम लोग Navy में थे, I was in the Navy, so we call it course correction. All right. Where the ship is going in one direction and you kind of है ना course correction पापा ने बताया होगा। Corkscrew। हाँ। Motion। Motion, yeah. So you get into that. So somebody has to do a course correction for you. Okay. And say that look, you are funny, and if at all, so then why don't you look at this line also? And how has the journey been so far? I'm here. I guess the journey has been good. I guess. All So right. otherwise, I wouldn't have been here, right? इधर हो दादा। अच्छा चलो ठीक है। So how do you feel, being from a disciplined atmosphere to this atmosphere where everything's a little more chill, people are laughing up to you. How do you feel about It it? looks chill, but I think comedy is also a very serious business. All And right. you just can't go on stage and do anything and get away with it because if the joke, like I do use a lot of at times, दिल्ली दादा आप वाले- गाली देते हो? वीडियो देखे मेरे? हाँ मैं देखा था। वो वीडियो के बाद मैंने काउंट करके देखा कि 20 बार क्या बात है? वो एडिटिंग में ध्यान नहीं दिया। So yes, I do, but then what people don't understand is that it's a 1 hour show in which if you use BC whatever 10 times तो वो पूरे एक 5 मिनट वीडियो में आ गया। So it's दिल्ली में तो ऐसी बातें करते हैं ना हम लोग। So this is a good thing for you, it's a bad thing for you. It's a natural flow. I think it relates to a lot of people because Delhi people talk like that. Like typical thing मैं तो छूती आ गया. नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं हाँ तो exactly. जानी भाई exactly. कौन बोल रहा है? Delhi people speak like this. Western Europeans speak like this. That's what we are So it is- represented from. So it's a part of the way you speak, and I think that's how it works. What about you, Tatva? You are from you have passed out from Xavier's in Hindu. So you always had that inclination towards a musical line or? अरे पढ़ाई में अच्छा था जी लेकिन ना साला चुल लग गई थी सच्ची में। So then yeah, Xavier's I graduated economics में। Economics में, okay. मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर 92.6 क्लास 12 साइंस विद All इकोनॉमिक्स। right. IIT क्रैक कर लिया था और IIT में वो क्रैक नहीं कर पाया। फिर जामिया ज्वाइन करा, वो आधे में छोड़ दिया Okay. क्योंकि पहली एल्बम आउट हो चुकी थी तब तक। And then we basically, I started doing a lot of EDM shows and played Sunburn and blah blah blah, blue around the globe, gigs happen and then सबसे गलत चीज़ हो गई दादा,
पैंचो मेरी शादी हो गई. Then we are basically Punjabis. Then all this Punjabi movement was taking a big course correction, Cox slow motion. cox promotion. तो बस धीरे धीरे करके फिर पंजाबी गाने सुनने शुरू करे, फिर कोशिश करी. Then Cox came into my life. Yeah. वो पुणे में था. So people who don't know, it's Ishan. It's his manager who's his lifeline as well. लवड़ा ब्रदर भाई. बस फिर ऐसे करते करते हो गया. फिर एक दिन ऐसे ही वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्क इन द स्टूडियो. एक दिन ऐसे ही एक बंदा वीओ करने आया मुथूट फाइनेंस के लिए. इसने बोला भाई आप देख लेना कैसे आप मुथूट फाइनेंस के लिए आया तो you had to show his music. नो वॉइस ओवर करने आया था स्टूडियो अच्छा, पे. okay. इसने कहा था भाई आप देख लेना काट वाट लेना उसको. Okay. बस वो मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया. मैंने कहा क्या चुतिया मुझे बजाते हो तुम लोग यार रेडियो पे पैंचो. सच्ची में ऐसे बोला. ऑनेस्ट स्टोरी है ये. एंड the fucker took it to heart man. He's like आओ हमारे शो में. हाँ. Please आओ. दादा ओवरनाइट. Yeah. मतलब Yeah, आई रिमेम्बर आई हैड गॉन टू मीट डीजे भाई. पलाश दादा डॉक्टर पलाश सेन्स Alright. बेस प्लेयर. वो मेरे गुरु हैं पलाश दा. तो गुड़गांव में कोई मिलने गया था तो रात को व्हाट्सएप आता है भाई कैन यू कम टुमारो एट 4 o'clock. अब दादा हम तो रेडियो नॉलेज फॉलेज तो थी नहीं. वो ऐसे ही बोला उन्होंने कर लेते हैं. मैंने कहा चलो कर लेते हैं. और शो का नाम नहीं पता था तो किसी का नाम नहीं था तो मैंने बोला यार नाचो पैंचो टैगलाइन है डाल दो. और ऐसे ही एक दिन अब शो का नाम नहीं था टैगलाइन वैगलाइन ढूंढ रहे थे. रात को पैक पी के गाड़ी में कोको को मैंने पूछा. मैंने कहा यार पैंचो ये नाम क्या रखना है. कहता भाई जोर से बोलो जय माता दी होता है. मैंने कहा जय माता दी हटाओ नाचो पैंचो जोड़ो कल हो गए. एंड ऑनेस्टली ओवरनाइट वी वर लाइक I didn't know. Then ऐसा होता था कि when in the first 6 months of the show started and we used to do a lot of live shows. तो we never knew कि कौन पता नहीं ना पब्लिक में कौन सुन रहे हैं. हमें तो पता नहीं हमारे कौन फैन है. हम तो सिर्फ काम करते जा रहे ठीक हैं. है. अभी तक की स्टोरी है. और सो हम लोग एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि भाई आदत डाल लो. वी डोंट नो हु इज हु. तो पहले तो फोटो वोटो पूछा. मैंने कहा यार पैंचो ये क्या होता है. देन द होल कपड़े सुधर गए. स्टाइलिस्ट आ गई. स्टाइलिश तो नहीं आई. अपन ही स्टाइलिस्ट है पैंचो. पूछे क्यों. क्योंकि कभी कभी अपन को लगता है अपन निज भगवान है. We know a story of Nacho Pancho. Why for you the naughty commander? I mean, how naughty are you in your real life? Alright, so Naughty Commander. So for me, I was traveling and I was performing in Dehradun with one young guy, and he said कि you should have a social media handle, ठीक है. which people can relate to you from the past and the present. Definitely. So commander तो पास था ही. उसमें बोले ये होमवर्क है आपके लिए. मैंने कहा ओके डन है. And then I thought कि I do 18+ content generally. बढ़िया है वो. हाँ मतलब चलता है सब जगह चलता है. हाँ. वो ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड में भी सब जगह चलता खूब है. भालो. सब जगह एवरीबडी लव्स इट. साउथ में भी सब जगह बच्चे हो रहे हैं इसलिए नो प्रॉब्लम. फैक्ट और मैटर ऑफ फैक्ट यू नो एवरीबडी. इंडिया में कौन वीडियो ठरकी दादा सब ठरकी. मेरे TEDx टॉक के 500 व्यू हैं और टीचर आंटी से प्यार के 5 मिलियन व्यू हैं. So we know what the youth is watching, right? So everybody loves it in their privacy, but acknowledging, see, देखो हम लोग बहुत hypocritic race है ना. दादा पता है क्या हाँ. वो करे तो ठीक है. हाँ. अपन लोग करे तो कैरेक्टर ढीला है. Exactly. So Naughty came in because I do 18+, and Naughty KNOTTY comes from the ship. For a ship, the speed is measured as Nautics. knots. KNOTS, Yes. which is equal to 1.8. So you wanted to associate yourself with Navy somewhere or the Why other. not? Why I mean, not? My card doesn't read commander. Okay. He just says Manish के त्यागी. So a lot of people ask me from my colleagues in the Navy, they said यार तुम कमांडर नहीं लिखते हो. मैंने कहा लोग जब पहचानते हैं तो मुझे लिखने की जरूरत है. बिल्कुल सही बात है. They should know me by that thing. बिल्कुल that सही he's बोल an रहे हैं. XCP guy. मैं लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा देख मैं B.Tech हूँ M.Tech हूँ MBA वो आप हूँ. अपने शो में बोल तो देते हो that I have been a commander. Yeah, I why have been a not? commander. Yes, why not? कैंटीन के नहीं दादा वो तो वो Canteen है. के jokes, कैंटीन के yeah. चक्कर में क्या? किसी को कहिए दारू और तो मैं दिला दूँ. वो तो ठीक है दादा मेरे भी कोटा खत्म हो गया पापा का इसमें. हमें कार्ड लाना भूल गया. पीटर स्कॉट. पीटर स्कॉट. There is this thing that you say, club बन गई शुरू चल हो जा. What is this? पहले आप सीखो क्या बोला है. What is this thing that you say? भाई ये होस्ट वोस्ट सब फुदू. लाओ अब आप इधर बैठो. I was coming from home and then I was listening. आप इधर बैठो मैं आपको करता हूँ हाँ, इंटरव्यू. ठीक है, okay. बिल्कुल जी फाड़ करूंगा. What is this thing that you मैं say? बोलता हूँ हाँ गाड़ी बन गई क्लब गुरु हो जा शुरू. Manish, can you say that in the same tone? दादा थोड़ा सा ना ऐसे Swag लेके. फेक ओल्ड मॉन्क अंदर डालने का. कर दूंगा. गाड़ी बन गई क्लब गुरु हो जा शुरू. गाड़ी बन गई क्लब गुरु. गाड़ी बन गई क्लब गुरु हो जा शुरू. तत्व
तत्वा क्या बोलते हैं बे हम? तत्वा के स्टाइल में जलने वाले साइड पे जो नहीं नाचे उनको भी नचा दूं, नाचो पेंचो। नाचो पैंचो तक ठीक है। पहले वाला स्क्रिप्ट थोड़ा सा भूल गया। So Manish, your description says you're a TED speaker, you're a host, you're a corporate trainer. How do you multitask everything? I mean, how has your description been changed from a navy to all these things? So I look at it this way, and I tell cheers. I tell the youth also the same thing is that, you know, once you have gotten to a line of entertainment, let's say stand-up comedy, let's assume is entertainment industry. Can I say that? Of course, दादा। So जैसे घोड़े के blinkers लगे होते हैं, वैसे blinkers नहीं लगाना है. You need to keep looking out for opportunities which will keep falling in Basically, your lap. you want to put your hand everywhere. No, I don't want to put my hand everywhere. All right. I just want to grab the opportunities which are coming by the way. ना डाल देते दादा। नहीं यार, You're good at it also, and you're brilliant at it. I mean, what's this workaholic attitude? How? No, I'm not a workaholic. Or not? Not at all. But Tatva, you are a pure workaholic because I've heard that even when you're making some beats, your 3-year-old kid is sitting with you and he's also helping you out, and you know you're spending time with him and you doing your own work together. वो काम करने नहीं देता आजकल। अभी भी wanted to come. Daddy, he's a cool kid. Yeah. Actually, he changed our lives, all our lives. When he happened with great difficulty also. बहुत हाँ दादा, मेरा जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोडक्शन है साला वो। बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी थी जब वो हो रहा था, मतलब आप मानेंगे नहीं, खराब चीज़ें हुई थी, बोलना उचित नहीं है। तो मैं स्टूडियो में था और हम सब नीचे थे स्टूडियो में, तो मैं ऊपर से नीचे आया और अगले दिन डिलीवरी थी। तो मैंने कोको को हाथ जोड़ के बोला ऐसे, मैंने कहा देख भाई, इस बार अगर नहीं हुआ ना तो छित्तर पड़ेंगे। और वो हुआ ऐसे दादा, वो भी काफी मशहूर है दादा, वो द फैंस लव हिम, वो है भी फुल पावर है, वो नाचो पेंचो बोलता है। So you're your own writer, your own music producer. I don't write जी, I don't write. I write when if I start writing. पूछे क्यों? क्यों? कभी कभी मतलब कुछ भगवान है। I used to do a lot of bhakti music at one point in time. Bhakti music also he's done. Yeah, हरिद्वार के बसों में नहीं दादा, I did the soundtrack for Oath of the Vaiputras, Amishka. Me, Palazada sang, Tawfiq bhai. Give me 2 lines for this. क्या था गाना? बड़ा सुंदर गाना था जी। बोलिए। It says, Badri re Prabhu Ram, I can see the sunshine. I can see the sunshine right above it. बद्री रे। already. बद्रीनाथ पे गाना था। हाँ, okay. अगर आपने किताब पढ़ी उनकी तो बद्री एक कैरेक्टर है उसमें। नहीं, वो मैंने गाना सिर्फ भी- बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखते हैं इससे हाँ, पहले। तभी मैं वो गाना नहीं निकाल रहा ना, आजकल की ऑडियंस वाला दादा पता ही नहीं ये फुतू है। Don't know. नहीं अब दिल पे मत लीजिएगा। Not at all. Alright, so that was a kick-ass round. Moving on, I'm going to introduce you to our second round, which is called the Better Together round, powered by MyHQ. So MyHQ is pretty big on hustling together as a community. They believe that when people from different genres come together, some crazy things happen. So, citing that, collaboration over competition, in this round, we are going to have a sort of a role play where I'll be giving certain tasks to you and you have to perform in the style, like the Tatva style, and I'm going to give some tasks to you and you have to perform like the Manish, the Sassy, and the Quizzy round. Alright? So, I'm going to give 3 lines. First, you're going to speak and you have to imitate that in the best possible manner. Okay, so try. ठीक है? Alright. Tatva ke style, baby. तत्व के स्टाइल बेबी, तत्व के स्टाइल बेबी। Alright. जोर से बोलो नाचो पैंचो बुर्रा. In his style? No, you have to say that in your style and he's gonna copy that. जोर से बोलो बुर्रा नाचो पेंचो। जोर से बोलो बुर्रा नाचो पेंचो। And the last thing that you would do, गाड़ी बन गई क्लब गुरु, हो जाओ शुरू। गाड़ी बन गई क्लब गुरु, हो जाओ शुरू। alright. So these are these 3 pictures that I have of Tatva. Okay. We have taken this from his Instagram profile. You have to look at these pictures and come up with the wittiest caption and description and make us believe कि actually picture का मतलब क्या है. So the first picture is this. हाँ, ये मछली में कब खाऊंगा? Fish fry. Hashtag बंगाली aquarium में मछली क्यों? और What is the actual description? What are you doing in this क्या कर रहा है, picture? सोच हाँ. यार I was showing off the kicks यार। So people who don't know that he has something for his shoes and go check out his profile. There's some crazy kick-ass shoes that is lying in his wardrobe right now. इसके पीछे भी स्टोरी है जो मैं कल छोटू को बता रहा था। What? दादा पहले बात
डिफेंस ऑफिसर के नेवल ऑफिसर के बेटे ने 3 जूते होते थे। तो साल में थोड़ी बचे तो कॉलेज में तो जेवर में तो पिताजी ने रिबॉक के 2500 रुपए के लेकर दिए। वो बहुत मतलब 2500 रुपए पूरी तरह कभी होते नहीं थे। तो जब आप लोगों के प्यार और मालिक ने इतना और माँ बाप की दुआ इतना काबिल बने तो अब जो दिखता है जूता उठा लेते। उठा ले। What's your favorite brand? I love J's man. Alright, so the second picture would be this. हाँ। अरे What are you doing in this picture? I would ask the story later on, but what do you think he's doing with the hashtag? मतलब ये भी हो सकता है कि इसके साथ जो बैठा हुआ ये तो नहीं है। नहीं बताओ पहले हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि जो इसके साथ बैठा है वो कह रहा है कि दादा मेरे हाथों की लकीरें मिट गई। हाथ में सिगरेट है actually। वो इसके हाथ में मेरे हाथ। तुम्हारे नहीं, ये बोल रहा है और तुम सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ जी। मतलब यू विजुअलाइजिंग एज टू कब कैसे क्या हुआ जो रेखाएं। ऑल्टरनेटली हो सकता है कि ये तुम्हें कुछ लोकेशन दिखा रहा है जहाँ पे कह रहा है दादा यहाँ पे तुम्हें अच्छी beer मिलती है. हाँ अच्छी बियर मिलती है, यहाँ पे हम शूट कर सकते हैं कुछ। So you are not a beer person, right? मैं दारू नहीं पीता। Oh, so what's the actual story behind this picture? So Dada, this photo has been taken by Joe. How? From Kolkata. This is we're sitting on top of a yellow cab in Calcutta. Okay. This is I think 3-4 weeks back or 3-4 weeks back. हमने गाना करा है, काफी गदर गाना है। गाने का नाम है प्यूकी पाई। Okay. तो उसका शूट है। Basically we are gunning down the biggest YouTuber in the world called PewDiePie. Because Okay. he abused. You're doing like the thing that. All right. So the track's called PewDiePie. The chorus is प्यूकी तेरी माँ की 18% दादा सब सुनते हैं. So the guy with me is the vocalist of this very famous band called Underground Authority. Okay. जो डांस India's Got Talent पे finalist थे. ठीक है. उर्वश देख सुना होगा आपने. Okay. तो ये he has written the song and he's singing on the track. So I'm close. हाँ. The third last picture is this. हाँ. What do you think he's doing in this picture? What is doing in this picture? जूता मिल गया. And otherwise it's like सोनम कपूर ने वो जूते खरीदे तो मैंने 3 साल पहले खरीदे ले लिया. What are you doing in this picture? What? So again, it's the same guy. It's EPR. Yeah, it's the same guy. EPR Iyer. His name is Okay. as crazy as I am. And so he used to call me Taswachi. I'm like, dude, আমি তোমাকে ভালোবাসি. Brothers, you know, bros before bros. Yeah. So मैंने बोला bros कहता है दादा house. Photo खींच. That's how this happened. So, out of all the gigs that you have ever done, what is that one kick-ass, Tatva ke style best concert that you've ever had? सारी बेस्ट होते हैं मैं सबसे गदर कौन सा था रे? मेहरानगढ़ फोर्ट वाला भी सबसे गदर था. शादी ऑफ द ईयर बताई थी हमने. You perform at forts also? अरे अपनी ओन फोर्स. अच्छा. अभी दादा अभी पूरा राजस्थान अपने इलाके में आने वाला है. अच्छा. So we played for a big super big fat Indian wedding and दादा crazy. So the people there बजट होता है. हमें बुलाते हैं लेकिन बोलते हैं बजट नहीं है. तुम्हारी वजह से. सभी होते हैं. तुम्हारी वजह से. हमारा जो सिंगर है उसने सर कुछ बचा ही What about you, Manish? One kick-ass event that you had Yesterday. yesterday. That was amazing. Tell us something about it. So I shared that Yeah. I was supposed to speak for 45 minutes and I was sharing the stage. Yeah. Matlab, Yeah. Ashish Vidyarthi was speaking and I was. So it was like quality first for this company, which is the number 2 company in the world, which Okay. manufactures these slot machines. You know, Vegas वगैरह में. They are international. They India international. ठीक है. So 45 minutes, some 300-400 people. Huh. Most of the people were standing in the cafeteria, rest were sitting. And I think those 45 minutes, there was fun, there was humor, there was roasting, and there was a delivery of a message which Okay. was they wanted to be done. So you had a good time. Absolutely loved it. All right. So this was for Manish. For Tatva, I'm going to give you a small situation, a 2-line situation, and you have to act like a stand-up comedian in this situation. And if you like one anyway. and if you want, you can give your cues, you can give your small tippity in between. अभी क्या मैं प्रैक्टिस करता रहा कि कैसे करके. All right. So the situation is, Manish is your boss. You're already late for work. Enact a situation where you have to make your excuse and your boss lets you in. So basically, you win. You're the gadar in the end, but you do it your way. So I'm Manish Dada. Yeah, you're Manish Dana.
And you can act like Tatva if you want to. ये कहाँ गांड मरवा रहा था? Manish, I was ऐसे हाथ मत कर, मतलब लग रहा है मरवा रहा था. I was trying to, कपड़ा नहीं मिल रहा था to clean my shoes. मुझे कपड़े नहीं मिले थे, clean your shoes. Okay. हाँ, तो तेरे पास 120 जूते हैं, फाड़ लेता है एक आधा. Sir, थोड़ी salary है, if you increase the salary, maybe things will. हो सकता है एक आध जूता कम खरीदे तो सैलरी ठीक लगे तुझे. Sir, abundance is In shoes? in life, sir. Life is like मंदिर खोलना तो लेकिन इसके बाद जूते लगवा. पैंचो नाचो, मतलब पूरे रात बस पैंचो नाचो पैंचो. Sir, your life is cool, sir. You are a big DJ and or a small DJ either way. And you are. बोलने से पहले सोचा नहीं मैच बीच पता नहीं है मेरे बारे में तुझे. Sir, I'll be honest with you, sir. If you chuck me out, I don't lose anything. it's You have to sell one shoe every month. Alright, so that was a tremendous round. Now we're going to move to our last segment, which is the rapid fire round, in which I'm going to ask you some questions and you have to answer in the most sassiest, or I would say the Gadar manner. Alright? So who do I start with? Who's going first? दादा Who's going first? मनीष दादा. Okay, let's do it. Alright. It has to be quick, sassy, and Manish style. And Manish. Alright? Okay. Alright. So the naughty commander, the questions go for you. Alright. One pickup line for Tatwa Ke. I have to pick him up. One pickup line. You're there on the show. दादा लीगल हो गया One है. pickup line. यार मैं भी नेवी से हूँ. तेरे पापा और हमने साथ साथ जहाज में बहुत गुल खिला है. बस हो गया अपना हो गया लड़का. Yeah. What would his Tinder description look like? I'm not on Tinder though. You know, you can't be. लाइसेंस I जब्त am. हो गया. I was. What would be his Tinder description look Tinder like? description would look like I've got 1200 pairs of shoes. 1200, 120. जैसा श्रद्धा आपकी. 1200 आशीर्वाद दे दिया. One thing that you can swap with him. Right now, Anything from his life, from his which general is the life. most expensive thing you're wearing? Probably his shoes. Probably his shoes. Depending on it. Okay. All right. Guessing look at the chain also. Yeah. All right. What sort of an audience would Tatwa be when you're doing a show? There is a different kinds of audience. What sort of an audience would he be? Depending on how many drinks he's had. मजा आ जाएगा. हाँ मजा आएगा लेकिन. अगले शो Couple पे होगा. अगले शो पे पक्का आ रहा हूँ जी. पक्का है. If not a music producer or a DJ, what is that one alternative career that you could think of for him? हरिद्वार वाले बाबा जी. All right. I'll give you 20 seconds. Crack me a joke. मतलब? Just crack me a joke. What? मतलब किस तरह का joke? You're a stand-up comedian. Just crack me a ऐसे joke. थोड़ी comedian अरे मतलब just on demand. just We are crack. stand-up comedian, we're not comedian on All right, demand. दादा, I'll give you a clue. पहले एडवांस चाहिए दादा. हाँ, पेमेंट भी नहीं है. Asu, there's a joke. Yeah. This being done for free. There's no payment in this. All right. One thing you would want to tell Kenny Sebastian when you meet him in person. Your father and his father was also in the Navy, by the way. अच्छा जी. So, हम तुम्हारे पापा और हमारे. ये केनी सेबेस्टियन कौन है? He's also leading He's also stand-up stand-up comedian. अच्छा दादा बढ़िया है. बहुत अरे next level. तो चक लेते हैं. हाँ हाँ, उसके पापा भी नेवी में थे. उसको उठा लेते हैं. उठा लेते, तीनों मिलके नेवी में. All right. If you would like to go back to army, for what is that one thing? नेवी. गाली मत दीजिए. नहीं नहीं. If you want to go back to Navy, for what is that one thing that you can go back to it? Yeah, for the love of uniform. Okay. दादा रिस्पेक्ट. है ना? क्या बात बोले वैसे. What do you do when you get stuck while you're doing your gig and you can't think of anything creative? What is that thing that you do? I start interacting with people. Okay. That's Just the secret I gave away. I'll have to kill you. Yeah, James Bond style. if you can exchange your sense of humor in world with one thing, what would you exchange it with? Better looks, I guess. नहीं दादा. नहीं. okay, सेक्सी sorry. लग रहे हो आप. Sexy लग रहा हूँ? हाँ. क्या बदलूं? कुछ बाल? नहीं. Okay, कुछ नहीं. Nothing. All right, that was the end for Manish. What a fantastic job done. Amazing. All right. Time for Tatwa Ke style, baby. हाँ जी. All right. One pickup line for Manish. अरे कितना सेक्सी हो गया अंशु. Since we know that he's already on Tinder, what do you think his Tinder description would look like? I have mastered corkscrew. Yeah, or corkscrew expert. Or I can turn the screws. Except his sense of humor, what is that one thing that you can?
Which way? Except his sense of humor, what is that one thing you would want to take away from him? मैं तो बहुत सीखा जियाद इनसे, जैसे कि एक गुरुदादा है, गुरुदादा समझते हैं आप, गुरु भाई जैसे भी बड़े होते हैं, हाँ, कुछ लेना, कुछ जो एनर्जी। One line in Punjabi that you can dedicate for Manish. हरियाणवी में कर देते हैं ना, हरियाणवी में कर दो। कसुत्ता छोरा पैंच, What does that mean? मतलब ही इज फुल पावर। All right. If you can't get one, if you can't not getting a beat right, what is your motivational source? How do you get the beat then? Cheers, baby. All right. One foreign DJ that you want to work with. They're going to work with me. Yes. And so, but yeah, I knew this was coming. but Yellow Claw. We would transfer the money Okay. any day. All right. Yellow Claw and Stefflon Dawn. All right. 1 lakh to 1 million subscribers in a day. वो तो वैसे ही हो जाना है, एक महीने, एक साल में कर देंगे हम। All दादा right. ठोक देंगे दादा। It's the doomsday. Everything's coming to an इसी end. बात पे सब्सक्राइब कर लेना सबके चैनल दादा के। Let me sell it. कर किस ले रहे हैं ये काम, है ना? ये Mad Talk. पागल टॉक सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, दादा नॉटी कमांडर को बिल्कुल बुन पाड़ देने का चैनल का, और हमारा तो अगर श्रद्धा हो तो कर लेना गुरु। All right. The world comes to an end. Everything is coming to an end. What is that one thing you would take from your studio? Since you love your studio. पीटर स्कॉट। मरेंगे तो शांति में। पी के तो मरे। One word that defines Tatva Ke. गांड फाड़, हार्डकोर, रियल, सत्यवादी, अदमाग से चुतिया। All right. If not a stand-up comedian, what do you think he would have been doing if he would have been retired from the Navy? What would his retirement plan look like? दादा चिल करते कोई वाइजैक के बीच पे कोई शैक वैक लगा के, है ना? All right, for that we come to the end of our round. What a round it has been. Thank you so much, both of you. So the person who gave me the most sassiest and the most gudder answers, any guesses? दादा Any person who, that person is going to bring a big fat mad hamper. दादा अपन को बांट लेंगे। मुझे ये लग रहा है। ऑप्शन है नहीं, दिवाली आ रही है। All right, so the winner of this round is Tatva Gang. So we have this lovely hamper for you. Thank you so much. दादा Both इसमें of you did a tremendous job. सर धन्यवाद जी आपका। दादा क्या चाहिए आपको इसमें से? All right, with that, we come to the end of our show. What a blast it has been. Thank you so much for coming Most to the welcome, show. ji. Thank you for inviting We us, had a ji. lovely time. So we are not going to end the show without you making us dance to our tunes. So let's just create some noise over here. दादा सानिया जी एक थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा है, सेक्सीपन कम हो रहा अपना सबका। बढ़ाओ तुम। बढ़ा ले, जोर से बढ़ा। इसी बात पे जोर से बोलो, नाचो पैंचो। गाने का नाम है पो 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 पो। लेट्स गो। ओके। ये वाला ना ऑक्सफोर्ड मैंगो। तो ये एक पता है बस लेफ्ट राइट वाला, दूसरा गाना बचा है। You guys can get up. You guys can get up. You guys, come here, come here. सेक्सी लग रहा है। ये सारा है। It's okay. वो ये वाला। सही था। भाई साहब, Hey guys. सब्सक्राइब करो गुरु, कमेंट करो, शेयर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू नहीं बनाओ ट्रेंडिंग में। इसका चैनल, मेरा चैनल, इनका चैनल, सबका चैनल। If you're looking for more creative workspaces like we had this one, please log on to www.myhq.in and look at the amazing co-working spaces that they have.